Assalamu-Alaikum, वेलकम टू नूर-e-Ilm साइंस अकेडमी। इट्स मी मोहम्मद हसन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ह्यूमन लैंग्वेज की स्टडी करना लिंग्विस्टिक कहलाता है। द वर्ड लिंग्विस्टिक हैज़ बीन derived फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉर टंग। Linguistics is scientific study of human language. Linguistics can be largely broken into three categories or subfield of study: language form, language meaning, and language in context. Linguists are people who study linguistics. Defined as the scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. We can say also linguistics is the study of language, how it is put together and how it functions. Various building blocks of different types and size are combined to make up a language. Types of linguistics. इसकी different types हैं: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics. ये इनकी टाइप्स हैं, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इन देयर फिजिकल एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड फोनेटिक्स। फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इन देयर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड फोनोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। Syntax, the study of formation of sentence is called syntax. Semantics, the study of meaning is called semantics. Pragmatics, the study of language use is called pragmatics. Main branches of linguistics. इसकी चंद मेन ब्रांचेस ये हैं: हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, कंपैरेटिव एंड कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक्स, सोशियोलिंग्विस्टिक्स, एथनोलिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्टिक्स, ग्रामर। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ the history and development of languages is called historical linguistics. Geographical linguistics, the branch of linguistics that involves the study of regional variation of speech forms, also called dialect geography. Descriptive linguistics, the study of grammar, classification and arrangement of features of a language at a given time is called descriptive linguistics. Comparative and contrastive linguistics. Comparative linguistics make a synchronic and diachronic comparison between two languages which are genetically similar. Contrastive linguistics contrast the structures of two languages in order to pick all the relevant differences. Psycholinguistics, the study of relationship between linguistic behavior and psychological processes, including the process of language acquisition. Sociolinguistics, the study of language in relation to social factors, including differences of regional class and occupational dialect, gender differences and bilingualism. Ethnolinguistics, the branch of linguistics concerned with the relation between linguistic and cultural behavior. Syntactics or grammar. In linguistics, syntax refer to the rules that govern the way in which words combine to form phrases, clauses, and sentences. The term syntax comes from the Greek meaning arranged together. The term is also used to mean the study of syntactic properties of a language. That's all.
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।